Radhe Radhe students, welcome back to my YouTube channel FlorenceNova. In today's lecture, we will begin a new topic. EVG means arterial blood gas analysis, and this topic is very important uh, for B.Sc nursing, GNM, ANM, and university examinations. Understanding the normal ABG results and then compare with abnormal ABG results. Okay, what is arterial blood gas analysis? Arterial blood gas is that test to use measure for acidity, O2 level and CO2 level. Related terms respiratory acidosis and respiratory alkalosis and metabolic acidosis and metabolic alkalosis. Okay, next is definitions. Assisting in arterial puncture means refer to assisting for collection of blood sample from an artery by performing an arterial puncture. Purpose of arterial punctures for accurate assessment of acid base status means pH, for assessing degree of oxygenations, and for starting continuous arterial blood pressure monitoring in emergency cases. Next is contraindications. Do not perform arterial puncture if local infections at site, disfigures anatomy, pressure of AV fistula in that lymph, peripheral vascular disease of lymph to be sampled, and thrombolysis or severe coagulopathy means bleeding risk अगर present है तो. Next is articles. Okay, let's move explain articles. A clean tray containing bowl with cotton balls and alcohol swabs, then gloves, then आपका heparin, then syringes 1 ml and 2 ml, then आपका kidney tray and paper bag, then आपका Macintosh with towel, and second tray is also there for ice cube. Okay, these all articles are required for ABG analysis. Okay, common arterial site. Preferred site is radial artery. Most common. Do Allen test first, then brachial artery, and then femoral artery in emergency situations. Next is procedure. Before procedures, first is find out the physician order. Next is identify correct patient. Then introduce yourself. Then explain the procedures. Then arrange all articles to the bedside of the patient, and then provide privacy and maintain positions. Okay, first is we prepare the syringe. We prepare the syringe as you required 1 ml and 2 ml. Then we need a 2 ml or 1 ml syringe. Why heparin? Because blood can clot and block the sample. So we wet the syringe with heparin. Means heparin से आपने इसको loaded करना है. Next, then must remove all airs. जब भी आपने फिल कर लेना है हेपेरिन को, then remove all air bubbles and excess heparin, because air will give wrong ABG values and too much heparin will change pH. So this step is very critical. Standard precautions: first, hand wash, then gloves to prevent the infections, then palpate the radial artery at rest. We choose a site where pulse is strong and easily felt. If pulse is not palpable, so we should not attempt. Okay. This is the most important test before radial AVG. What we do? We block both radial and ulnar arteries with our fingers and ask the patient to uh, open and close fits till hand become pale. आपने क्या करना है? रेडियल एंड अर्नल आर्टरी को बोथ साइड से आपने ब्लॉक करना है एंड पेशेंट को बोलना है क्लिंच एंड अनक्लिंच करने के लिए, ओपन एंड क्लोज करने के लिए. If color return in less than 15 seconds, so it means ulnar artery is good and can supply hands alone. So radial artery is safe to puncture. If color does not return, so do not use radial artery for puncturing ABG. Next is we also do the reverse
block both branch, then release radial artery and keep ulnar block. आपने एलन टेस्ट परफॉर्म करना है, फर्स्ट आपने ब्लॉक करना है, देन रिलीज करना है अब रेडियल आर्टरी को. फर्स्ट में आपने रिलीज किया था अल्नर आर्टरीज को. इफ कलर रिटर्न रेडियल इज गुड, and we also elevate hands to make it pale and then lower to see the refill. मीन्स आपने फाइंड आउट करना है रिफिलिंग हुई है हमारे हैंड्स की या नहीं है, पेलनेस तो प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे. इफ बोथ टेस्ट आर पॉजिटिव तो रेडियल आर्टरी इज safe. If either test is negative, choose other hands or other artery. Next, after Allen test is positive, we place a small towels under wrist and then hyperextend the wrist and bring the radial artery closer to surface. आपने closer to surface रखना है. And now we ready for the actual puncture. No Allen test, no radial puncture. After procedure, hold pressure for 5 to 10 minutes because arteries are high pressure and can cause hematoma. And never use arm with dialysis fistula. अगर fistula present है arterial venous fistula तो आपने पंचर नहीं करना है. Okay, next, first place a waterproof pad to keep a bed dry, then palpate the artery, radial artery, with 2 fingers to find the strongest pulse, and then stabilize the wrist. आपने स्टेबल करना है पेशेंट की रिस्ट को. देन क्लीन द एरिया विद एंटीसेप्टिक इन सर्कुलर मोशन, कि आपने सर्कुलर मोशन में क्लीन करना है. एंड देन if needed तो local anesthesia can be given because arterial puncture is painful. तो आपने क्लीनिंग करना है, आपने जो भी आपका पाल्पेटेड एरिया है उसको सेंटर टू आउटर फॉर्म पे इसको क्लीन करना है. एंड देन फॉर फ्यू मिनट्स हम ड्राई होने के लिए रखेंगे अपने पेशेंट का. एंड देन आपने क्या 45 to 60 degree angle and puncture the skin and advance into the artery. You do not need to pull plagger. आपने प्लेगर को पुल नहीं करना है, ठीक है. And then arteries pressure itself will push blood into syringe and you see pulsating bloods. This confirm you are in artery, not vein. जैसे आपने पंचर किया 45 to 60 डिग्री पर, आपने जहाँ पे फील किया हुआ था नॉन डोमिनेंट हैंड्स आपने प्लेस किए, फील किया. एंड देन अब आपने क्या करना है, उन 2 फिंगर्स के बिटवीन ही आपने पंचर करना है. एंड आपने प्लेगर को नहीं खींचना है. जैसे ही आप प्रिक करोगे तो तुरंत आपका प्लेगर अप होना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये और एंड आप सी करोगे अपने ब्लड को तो पल्सेसिंग वहाँ पे फील होंगे उस ब्लड के अंदर. तो पल्सेटिंग फील करा रहा है कि आपका जो निडल प्रिक किया है, पंचर किया है, वो आपके आर्टरी के अंदर हुआ है, ना कि वेन के अंदर. Once blood is collected, quickly withdraw needle and immediately apply film direct pressure. मीन्स आपने फटाफट जैसे ही आपका ब्लड कलेक्ट हो गया देन आपने प्रेशर वहाँ पे अप्लाई कर देना है. Minimum 5 minutes for normal patient. If patient is on blood thinner, hold pressure for 10 to 15 minutes, and this is the most important step to prevent hematoma and bleeding. Immediately remove air bubbling by pricking syringe and and uh, cap it using a rubber stoppers on table, or do not hold it in hands to avoid needle stick injury. Okay, and then put the syringe in eyes. वाई क्यों रखते हैं हम इस आइज़ के ऊपर इस सिरिंज को? बिकॉज सेल्स इन द ब्लड कीप कंज्यूमिंग ऑक्सीजन्स एंड इफ वी डिले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 and pH will change and give false result. Okay, and then for patient on heparin or warfarin or aspirin, bleeding times is more, so so hold pressures for 10 to 15 minutes एंड देन पुट ए प्रेशर बैंडेज अगर आपको अदर फॉर्म कोई प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं तो. आफ्टर प्रोसीजर इफ द पेशेंट नीड रिपीटेड AVG तो डॉक्टर में पुट एन आर्टियल लाइन and then send sample to lab immediately
on eyes. And most important, check the hand circulations distals to पंचर साइट, यानी कि ये साइट आपने चेक करना है. Check hand circulations distal to puncture site, check pulse, and then color, and then warmth, then movement, and then sensations. If hand become cold or blue, report immediately. It could be thrombosis. And finally, based on EVG report, doctor will change oxygens or uh, ventilator settings. Okay, next is complications of arterial puncture, bleeding, hematoma, arterial thrombosis, loss of pulses, infections, and then nerve injuries and pain. Next is documentations. Document date, time, site of punctures, then number of attempt कि कितनी बारी में आपने एवीजी एनालिसिस वहाँ से लिया है, पेशेंट टॉलरेंस, प्रेशर अप्लाई एंड फॉर हाउ लॉन्ग, स्पेसिमेन सेंड टू लैब एंड पेशेंट रिस्पॉन्ड एंड सर्कुलेशंस चेक. नेक्स्ट इज समरी, स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट एवीजी प्रोसीजर्स प्रिपेयर करना है हमने, देन एलन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, देन क्लीन एंड एनेस्थाइज अगर नीडेड है, एंड निडल को पंचर करना है 45 to 60 डिग्री पर. Then let atrial pressures filled syringe. Then withdrawal and pressure for 5 to 10 minutes. Then remove air. Then place on eyes and then send to lab. And then check circulations and then document. ओके, की टेक वेज, आपका एंगल 45 to 60 डिग्री आपने प्लेस करना है निडल को. फिलिंग बाय एट्रियल प्रेशर्स एंड पल्सेटिंग प्रेशर्स 5 मिनट्स नॉर्मल. अगर आपका हेपेरिन या अदर ब्लड थिनर मेडिसिन्स पर है तो 10 to 15 मिनट्स वहाँ पे होल्ड करना है प्रेशर को. देन सैंपल, नो एयर इन आइज, देन सेंड इमीडिएटली. एंड आफ्टर केयर चेक डिस्टल सर्कुलेशंस, मीन्स आपने पल्स को चेक करना है. यहाँ पे कंप्लीट एवीजी एनालिसिस चार्ट एक्सप्लेन किया है कि पीएच नॉर्मल कितना है, 7.35 to 7.45 होता है. पार्शियल प्रेशर 35 CO2 का 35 to 45 mm ऑफ Hg. बाइकार्बोनेट 22 to 26. देन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 80 to 100. देन SpO2 आपका 95 to 100% रहता है. रोमी रूल्स को आपने लर्न करके रखना है. रेस्पिरेशंस में हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, मेटाबॉलिक में इक्वल डायरेक्शंस में मूव करते हैं. हमने पीएच एंड देन CO2 एंड बाइकार्बोनेट वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी होती है, जैसे यहाँ पे आपका दिखाया हुआ है. ओके ओके, नेक्स्ट है स्टेप बाय स्टेप हमने ये सारी चीज़ चेक करना है. पीएच जो इंडिकेट करता है हमारा एसिडोसिस और एल्कोलोसिस को. नेक्स्ट आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है वो चेक कराता है हमारी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कोलोसिस को. नेक्स्ट आपका मेटाबॉलिक जो है वो आपका कराता है बाइकार्बोनेट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या एल्कोलोसिस है. एंड देन चेक कंपनसेशंस कि फुली कंपनसेटरी है या पार्शियल है या फिर अनकम्पनसेट फॉर्म पे है, नॉर्मल. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to FlorenceNova. Your support motivate us to create more high quality nursing lectures for B.Sc nursing, GNM and ANM students. See you in the next lectures. Until then, keep learning and keep caring, and thank you so much.